Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Nayyar Iqbal. Students, you know that we are solving equations which are reducible to quadratic form. And in from previous two lectures, we are solving radical equations. You see type number 5 where we see that in equation there is a radical term under which we see second degree polynomial, and in type 6 you see there are linear factors, linear polynomials under the radical sign in this equation. And now we are going to start our type number 7, where you will see there will be second degree polynomials under the radical sign, and these second degree polynomials can be factorized. And one thing is important to note in this type, that there will be after factorization of these second degree polynomials, we get a linear factor with the square root sign will be the common factor among all of these terms. So in this way we shall solve these questions. Students, these questions might be little bit lengthy, and this lecture may take some more time as usual. So see how we solve this type of questions. Okay students, we start type 7, radical equations of the form. आपके सामने है कि तीन हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स मौजूद हैं और हर एक में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है, वेयर ऑल दीज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, इन्हें हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं. ऑल थ्री सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स हैव ए कॉमन लीनियर फैक्टर, which means these three quadratic factors can be factorized. It must be noted that in these questions each of the px square plus qx plus r and lx square plus mx plus n, each of the are factorized, and one linear factor will be common of the equation. ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें तीनों जो हैं ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इन तीनों क्वाड्रेटिक टर्म्स जो हैं इनको फैक्टराइज करेंगे. So solution, consider x square plus 4x minus 21. इसको हम फैक्टराइज करें तो x square plus 7x minus 3x minus 21. So you see x common, x plus 7 minus 3, x plus 7, which means x plus 7 and x minus 3. Now we take second term minus x minus 6. This is x square minus 3x plus 2x minus 6, which gives x common ले लें, x minus 3 plus 2, this is x minus 3, which further gives on simplification this is x plus 2. Now we take the third factor and try to take common out. Third factor,
This is 6x square minus 5x माइनस 39। सो अब आपने इसके भी फैक्टराइजेशन करनी है। सो सी इट्स फैक्टराइजेशन। 39 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ। So we have 234. Now we want to factorize this one. So 2, 2, 7, 3, and 3 into 13. So we have 6x square minus 18x plus 13x minus 39. This will be, from here we see 13 into 18, that will be the, so 6x common निकाल लें, x minus 6 and x minus 3 sorry, and plus 13 अगर आप कॉमन निकालें तो x minus 3, which gives you x minus 3 and 6x plus 13. So the given equation becomes, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, that is x plus 7 and x minus 3 स्क्वायर रूट प्लस सेकेंड आ जाएगा हमारे पास x minus 3 and x plus 2. This is equal to x minus 3 and 6x plus 13 its स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स देखें कि x minus 3, x minus 3 और x minus 3 ये एक ऐसा फैक्टर है लीनियर जो सब में कॉमन है। Therefore we have x plus 7, x minus 3 plus x minus 3 and x plus 2 square root minus x minus 3 and 6x plus 13 its square root, this is equal to 0। इन तीनों में से हम x minus 3 square root कॉमन निकाल लेते हैं। सो वी हैव x plus 7 plus x plus 2 and minus 6x plus 13, this is equal to 0। सो स्टूडेंट्स ये जो x minus 3 स्क्वायर रूट है, इसको अगर आप ज़ीरो करते हैं, x minus 3 स्क्वायर रूट को अगर आप ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, सो वी हैव x minus 3 which gives us one solution, that was one of the rule. No, we solve this factor. So we have now x plus 7 and plus x plus 2 minus 6x plus 13, this is equal to 0। स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि इस किस्म के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। सो x plus 7 प्लस इसको हम राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। यू नो स्केयरिंग on both sides, so we have x plus 7 plus x plus 2 plus 2 times x plus 7 and x plus 2, that is right hand side पे आ जाएगा आपका 6x plus 13। so 2 that is x square plus 9x plus 14, that is 6x plus 13 minus 2x minus 9। so we have 2 that is x square plus 9। फ्राम हेयर सब्ट्रैक्शन के बाद आप देखें प्लस 4, और ये 2 जो है इसको डिवाइड करके ख़त्म किया जा सकता है, दैट इज डिवाइडिंग बाय 2। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14
इट्स स्क्वायर रूट दैट इज़ 2x + 2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्केयरिंग अगेन करेंगे, स्केयरिंग अगेन। Scaling again. So we have x square plus 9x plus 14 that is equal to 4x square plus 4 plus 8x. Now you see we have 4x square minus x square plus 8x minus 9x and plus 4 minus 14, this is equal to 0. So we have 3x square minus x and minus 10, this is equal to 0. So we have minus 30. अब आपने इसको फैक्टराइज करना है. So 3x square minus 6x plus 5x minus 10, this is equal to 0. From here 3x common, x minus 2 plus 5 common निकालें, x minus 2, this is equal to 0. Therefore x minus 2 and 3x plus 5, and from here we have x is equal to 2 and minus 5 by 3. Students, this root minus 5 by 3 is extra root. Here on verification, minus 5 by 3 found to be extra root. So solution set is एक ये 2 और हमारा इससे पहले जो रूट आया था वो था 3. So students, next question, that is question number 7. Solution. Consider x square plus 2x minus 13. अगर हम इसको फैक्टराइज करें, so we have x square plus 3x minus x minus 3. So x कॉमन ले लें, so we have x plus 3 minus 1 कॉमन ले लें, x plus 3 which gives x plus 3 and x minus 1. Now we take this second term, x square plus 7x minus 8. This is x square plus 8x minus x minus 8. Therefore we take x common, x plus 8 minus 1 common निकालें तो x plus 8 which gives you x plus 8 and x minus 1. Now we take this third factor. This third factor is x square plus 3x minus 4, that is x square plus 4x minus x minus 4. इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं ना, so x plus 4 minus 1, this is x plus 4. Therefore x plus 4 and x minus 1. So given equation becomes, so given equation हमारे पास आ जाएगी जी x plus 3 into x minus 1 and then plus x plus 8 and x minus 1. On right hand side we have x plus 4 and x minus 1 multiply by 5. So students देखें यहाँ पे x minus 1 जो है ना, ये फैक्टर ये हमारे पास कॉमन है. Therefore x plus 3 x minus 1 plus this is x plus 8 and x minus 1 left hand side पे ले आएं, 5 into x plus 4 and x minus 1, this is equal to 0. From here x minus 1 square root आप कॉमन ले लें, so we have x plus 3 x plus 8 and minus 5x plus 20, this is equal to 0. From here, if this, because these are two terms, so this term implies that is x minus 1 0, which gives us x is equal to 1. Now these three radical terms having linear factor, we try to solve that one.
So we have x plus 3 square root plus x plus 8 and minus 5x plus 20, this is equal to 0, which can be written as x plus 3, this is equal to 5x plus 20 स्केयरिंग, आप इस रकम को स्केयर कर देते इक्वेशन पूरी को. सो वी हैव x प्लस 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 2 टाइम x plus 3 multiply by x plus 8. On right hand side we have this term. Therefore 2 x square plus 11x plus 24, its square root. So we have 5x plus 20 minus 2x minus 11. See x square plus 11x plus 24, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x और 20 में से 11 तो प्लस 9. So scaling because we cannot divide. Okay, so scaling again on both साइड. इस तरफ से स्केलिंग करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, दैट इज़ 9x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 54x. सो फर्दर वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस टर्म. सो 9x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 54x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 44x and minus 96, this is equal to 0. If we simplify this term, that is 5x square minus 44x and plus 54, that is I think plus 10x and minus 96 or plus 81, that is minus 15, this is equal to 0. So from here you see we have x square plus 2x minus 3, this is equal to 0, and we factorize this term x plus 3 and x minus 1, this is equal to 0, which gives 1 and minus 3. So these are the two roots. Solution set 1 minus 3. सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको इसी टाइप के 2 सवाल करवाऊँगा. थोड़ा सा लेक्चर लेंथी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं. सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर.